हाय एवरीवन, स्टडी विथ एसजी यूट्यूब चैनल को आपण समस्त स्वागत जनाऊँगी। आज हमें देखिए नवम श्रेणी परमाणु गठन विषय देखा। तो परमाणु देख आम जिते भी आम चतुष्पार्श्वर देखुचे ना आमर जहाँ रही वृक्षलता जल एवं पवन जहाँ रही ना सब कौन द्वारा गठित हो परमाणु द्वारा गठित होमतीक मानव आमर परमाणु द्वारा गठित हो बर्तमान तुम मैंने कह आप कहते मानव परमाणु द्वारा गठित ताकि संभव देख आम जिते देखा आमर कौन रही मानव शरीर कौन रही 70 ରୁ 70% आमर कौन रही जल रही। तो से जल क्या द्वारा गठित आमर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या द्वारा गठित होती परमाणु द्वारा गठित होती आम शरीर जहाँ रही आम प्रोटीन क्या द्वारा गठित परमाणु द्वारा ही गठित। तो से विषय डिटेल्स देखा कि पूर्व कौन है ना देख 18th और 19th सेंचुरी ना अनेक वैज्ञानिक मैंने कौन करते ना से पदार्थ भितर ना कौन जिनस रही से पदार्थ मान भितर को अजना विषय जो रही ना से विषय देखापी से कौन करते जानापी से बहुत आग्रह प्रकाश करते। तो से 18th और 19th सेंचुरी अनेक वैज्ञानिक मैंने से परमाणु विषय जो पदार्थ भितर जो परमाणु रही से परमाणु विषय से विभिन्न प्रकार तथ्य प्रदान करते। प्रथम आसते 1808 मसीह कि आम डाल्टन जॉन डाल्टन आसते से आमर पदार्थ भितर ना जो परमाणु रही से पदार्थ जो परमाणु रही से विषय किसी तत्व देते जहाँ कहे डाल्टन परमाणु तत्व डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आम जहाँ कहे। तो परमाणु विषय से कौन कौन विषय सब कहते क्लास आज डिस्कस करवा। से प्रथम विषय कौन कहते देख पदार्थ अनेक गुड़े अति क्षुद्र कणिका द्वारा गठित आमर जो पदार्थ गुड़िक रही ना से पदार्थ गुड़िक से कौन कहते ना अति क्षुद्र कणिका द्वारा से गुड़िक गठित कहते। देख पदार्थ बोले मैंने कौन जानूँ पदार्थ मान कौन जार किसी भर रही जहाँ मास जो रही किसी एवं से कौन कर स्पेस ऑक्युपाइज करुच्ची स्थान किसी दखल कर। देख उदाहरण सहित तुमको कहबी आम देखो मार्कर मार्कर किसी मास रही जब मुझे आपुल रखुच्छी से किसी स्थान अधिकार करुच्चे पदार्थ कहचे। तो से पदार्थ गुड़िक अनेक अति क्षुद्र कणिका द्वारा गठित से कहते। तो ये पदार्थ गुड़िक ना क्या द्वारा गठित आम क्षुद्र क्षुद्र कणिका द्वारा गठित आ से कणिका से कौन कहते से कणिका गुड़िक परमाणु कहते। तो मूल विषय कहवाक गले आमर परमाणु को नहीं कौन गठित पदार्थ गठित मैंने कहीपर पदार्थर मूल गठन एकक कौन अटे परमाणु अटे। द्वितीय विषय से कौन कहते परमाणु गुड़िक अविभाज्य कणिका परमाणु गुड़िक कौन अटे अविभाज्य कणिका। देख जब आम गोटे पदार्थ नेबा आम एक रक नेबा जो पत्थर नेबा तो से पत्थर को जब आम भांगी भांगी जा एमती एक भाग पहुँचा जहाँकि बहुत क्षुद्र अंश पहुँचा आते से क्षुद्र अंशटी पुनर्बार कौन कर अविभाज्य विभाजित कर भाग अधिक सान क्षुद्र आर से कहते एक पदार्थ को भांगी 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 जाऊे आम एक क्षुद्र अंश पाचे से अंश को आउ थे भांगी पारिबा नहीं से कहते से भांगी पारिबा नहीं से कहते। तो से भंगा जाई पारिबो नहीं भंगा जाई पारिबो नहीं से कहते। एवं से तृतीय विषय कौन कहते कौन से एक मौलिकर परमाणु गुड़िकर वस्तुत्व और रासायनिक धर्म समान। देख एक जदि आम गोटे मौलिक ना ऑक्सीजन मौलिक जो गोटे ऑक्सीजन मौलिक ना अनेक ऑक्सीजन मौलिक सहित से कौन धर्म एवं से रासायनिक और वस्तुत्व और से धर्म कौन होता है समान होता है से कहते। जब आम गोटे हाइड्रोजन मौलिक ना तो से हाइड्रोजन समस्त हाइड्रोजन मौलिक सहित कौन से वस्तुत्व और से रासायनिक धर्म समान होता है आम डाल्टन कहते। चतुर्थ विषय से कौन कहते ना विभिन्न मौलिक परमाणु गुड़िकर वस्तुत्व
ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ 1808 ମସିହାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ କିଛି ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ 1, 2 ଆଉ 3, 4 ଚାରିଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ସେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ମୋର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରମାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଗଠିତ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି, ବା ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଏକକ ଗଠନ ହେଉଛି ପରମାଣୁ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ କହିଥିଲେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି 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 ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୋଲି ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଆଟମ୍ଟା କ'ଣ ତାକୁ ଡିଭିଜିବଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ବିଭାଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ନା ପରମାଣୁକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନା ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଡାଲ୍ଟନ୍ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଧର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସମାନ ସମାନ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ସମାନ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମୌଳିକ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନେବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିଅଛି ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ବୋଲି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମାଣୁର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ପରମାଣୁର ଗଠନର ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ବିକାଶରେ ଜନ୍ ଡାଲ୍ଟନ୍ ଆସିଥିଲେ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମର 1808 ମସିହାରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ এই ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ এই ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କି ପରମାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଅଛନ୍ତି ସବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍। ତ ଆଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ এই ତିନୋଟି ସବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ରହିଛି ବା ଡିସ୍କୋଭରି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।